Welcome to Cinema with SaGa. I hope by the looks of it आपको समझ आया होगा that we are currently in a foreign location. La. Of course, Sanju, you're adding la after every sentence, and how can it be not clear कि तू हंशी दाओ से? La. La. This week we rushed to catch the first day last show of the very hyped Jigra, starring Alia Bhatt, Vedang Raina, and Manoj Pawa in titular roles. When we both saw the teaser for this movie, Sanju, immediately शायद हमने decide किया था कि भाई ये तो मस्त लग रहा है, इसको first day last show देखेंगे थिएटर में जो हमने किया. And then थोड़ी देर बाद जब ट्रेलर आया था, मेरा तो एक्साइटमेंट डिप हो गया था 10% से. मेरा 30%. हमें मतलब लगा था कि there was so much going on in the trailer, but कुछ feeling जो आना चाहिए देख के वो आ नहीं रहा था. And usually like Gaurav predicted this, and usually वो हर टाइम ही गलत होता है. But when we watched the movie, I was so surprised कि यार जिसने जो predict किया था ट्रेलर देख के वो actually सच में था. Simply put, this is a prison break movie. Alia plays the role of Satya, a young woman who has endured a difficult childhood. Now only has one person left in her life, her brother Ankur, who is imprisoned and tortured in Hanshi Dao's jail. La. How this young fragile woman, who supposedly has a lot of jigra, will eventually free up her brother from a racist prison in China, Hanshi Dao, La. forms the overall plot of the movie. La. टीजर और ट्रेलर ने तो संजू ऐसा प्रॉमिस किया था, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा था कि आलिया को सुपरस्टार आलिया. मुझे बोलने दे यार पहले. ये मेरा रिव्यू है यार. लेट मी डू माय पार्ट फर्स्ट एंड देन यू हैव योर चांस. पूरा प्लॉट इस चीज पे डिपेंड करता है कि आलिया किस हद तक जाएगी अपने भाई को बचाने के लिए. एंड गौरव की बहन तो उसके लिए पानी तक लेके नहीं आती. बट हम ये देखते हैं कि आलिया इतना दूर जाती है उसके भाई को एक फॉरेन जेल से बचाने के लिए, दैट टू अ जेल व्हिच हैज मैक्सिमम सिक्योरिटी. तो इस चीज को करने के लिए एक ऐसा बॉन्ड दिखाना चाहिए दैट इज सुपर स्पेशल बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर. कितना डीप लगा तुझे उनका बॉन्ड जो दिखाया गया था? वेल, बॉन्ड तो काफी डीप था, लेकिन 2-3 हार्ड हिटिंग इमोशनली ग्रिपिंग मोमेंट्स ही है ऐसे. एंड आई सो विश्ड कि ऐसे मोमेंट्स और थोड़े होते इस मूवी में. इसके अलावा मुझे पोस्टर, टीजर, ट्रेलर से जो वाइब आ रही थी इस मूवी को लेके, इट वाज एन एनिमे इंस्पायर्ड वर्ल्ड जो ये लोग प्रॉमिस कर रहे थे. एंड आई एक्सपेक्टेड आलिया टू फाइट डीमंस बिगर देन हरसेल्फ यूजिंग हर जिगरा एंड हर शार्पनेस एंड मे बी ऑल्सो अ कटाना. Maybe because I was hoping to see Alia as a modern day samurai. But इस मूवी में ऐसे एक तो scenes है ही नहीं fighting के. And even when Alia was fighting, she looked too fragile, diminishing the impact of the scene in itself. Her character actually demanded equal physical and mental prowess, and Alia से ये दोनों नहीं दिखा. Based on the first look of the movie, Alia was promised to be the lady superstar going toe to toe against her husband Ranbir Kapoor. It seemed like दोनों पत्ती पत्ती kill कर रहे हैं with their movies. लेकिन as much as I wanted to root for Alia and I wanted to like her in the movie, she hasn't really done anything that impressive. On multiple occasions, Alia बोलती है कि she is a badass and she has a black belt, almost black belt in karate, and उसको रेस से बाहर निकलना पड़ा because rules don't apply to her when she is angry. वेदांग भी क्लाइमेक्स में बोलता है कि दीदी गुस्से में अभी कुछ मत करो. आलू बैडअस बन के दिखाते हैं, बोल के नहीं. ट्रेलर के सारे इम्पैक्टफुल मोमेंट्स एक्चुअल में इम्पैक्टफुल नहीं थे इन द मूवी. इट ऑल फेल फ्लैट. Compared to some of my other favorite badass characters like Rita Vrataski from Edge of Tomorrow, or the Bride from Kill Bill, or even Kate Mesa from Sicario, Alia's portrayal of Satya is forgettable, and I fear that producers would think 100 times before greenlighting a similar project with another female lead. Sigh. भाई वसन, आपको क्या हो गया यार? मर्द को दर्द नहीं होता. मोनिका ऑफ माय डार्लिंग इतनी अमेजिंग कल्ट क्लासेस बनाने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन संजू ऑनेस्टली बहुत ज्यादा थी इनसे. लेकिन सैडली यार, मोर देन आलिया भट्ट, मोर देन द मिस पोटेंशियल ऑफ एनिमे स्टाइल एंड व्हाट नॉट, मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूं सर. मतलब क्या है ये यार? क्या पता, मे बी इट्स नॉट जस्ट हिम एंड कई और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मूवी केम आउट द वे इट डिड. Move consciously spot, send it to Karan, and
I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. खैर ये इंटरव्यू तो काफी स्कैंडलस था संजू, बट बैक टू द फाइनल प्रोडक्ट जो हमने आज देखा, आई विश की जो ग्लिम्सेस थे उनकी जगह ओवरऑल प्रोडक्ट भी सेम क्वालिटी का होता यार. ओजी वसन बाला एलिमेंट्स जो कि थोड़े बहुत थे मूवी में, जैसे बच्चन सर को ट्रिब्यूट, 90s का म्यूजिक एंड फोरशैडोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन सम सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड सीन. सिनेमैटोग्राफी एज ऑलवेज काफी अच्छी थी. कलर्स एंड म्यूजिक परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे वैसे वाइब को. Animalistic behavior in the plane and the way it's foreshadowed with the dialogue which involves fire and mayhem, that's a very good nod to the climax of the movie. There is also a revolution going on in Hanshi Dao, La. I wanted it to play a bigger role in the movie, but it's briefly mentioned in the starting and then climax में randomly reuse होता है to ignite people. I mean, come on man, थोड़ा तो कुछ back stories को दिखाओ लोगों की. बैक स्टोरीज से याद आया, आई लाइक मनोज पावा एज अ रिटायर्ड गैंगस्टर एंड विवेक गोम्बर एज द ओआईसी हंसराज लांडा. आई थिंक इन दोनों एक्टर्स को जो मटेरियल मिला था उस हिसाब से they've done a fantastic job. लेकिन इन कैरेक्टर्स की स्टोरीज आर एज वनीला एज इट कुड बी संजू. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के भी एक्शंस की. Why is that Landa guy so adamant on killing the 3 prisoners even by his hand when there's a riot going on in the jail and he's the jailer? ऐसी इलॉजिकल चीजें ना काफी ज्यादा है यार मूवी में. प्लॉट होल्स के नाम पे इतने ज्यादा गड्ढे हैं इस मूवी में कि भाई हमें तो जिगरा ना है ये सब समझाने का. यहाँ पे ऑल इन ऑल आई वुड से कि भाई पेपर डोसे जितना थिन प्लॉट है इसका, छोटे भीम जितने डीप कैरेक्टर्स हैं इसके, लेकिन जो 100 करोड़ के बजट में चाइनीज भेल या खिचड़ी बनाई है ना हमसे ना खाई जा रही है संजू. नो ऑफेंस संजू, हम दोनों ने अपना हाई लेवल रिव्यू तो दे दिया, बट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ आवर अदर ऑब्जर्वेशंस. यस, ऑब्जर्वेशन से याद आया, व्हाई इज देयर एन इंडियन इन दिस मूवी कन्वीनियंटली इन एवरी सीन. मतलब सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में वो सारे ही इंडियन हैं एंड द लोकेशन इज हांशी डाओ इन चाइना. But they speak with la in the end, so that makes it okay. Anyway, yeah, लेकिन फिर ऐसे illogical scene के बदले there's that scene, remember जब वेदांग is cleaning that electrocution chair and उस scene से psychology break करना inmates की, that's very deep writing. Yeah, we're talking about such good scenes. फिर मुझे मूवी का aesthetic भी अच्छा लगा है. I feel the location that they've chosen and the backdrop of that festival that's going on, आलिया के कपड़े, बाल, I think it's all spot on, but I felt, I don't know, somewhere that movie was not able to cash in on all of these good execution parts. मुझे लगता है मार खा के with all that जो तुमने बताया अभी, hair makeup, imagine neon lighting के साथ एक alleyway में fighting scene and Alia is fighting some villains and even एक कटाना होती वहाँ कितना अच्छा लगता है. Bollywood version of Kill Bill. अच्छा ये है मूवी में, but man, the missed potential with this project, I mean, come on. Alia ki missed opportunity as an actor to create a genuinely strong female character. Vasan Bala ki missed opportunity as a creator to create something totally new in Bollywood. Audience ki missed opportunity to see something really cool coming out of Bollywood. Whew. Another case of a project where individual elements excite you so much, but sadly, the end product is bleh and mediocre at best. Yeah. I would give this a 4 out of 10. Really? इतना कम? मैं मतलब I feel कि वो भाई बहन वाला connection उन्होंने काफी अच्छे से दिखाया है, and also they've made very good use of that classic song फूलों का तारों का. I was almost in tears at multiple instances in the movie. तो इसलिए मैं इस मूवी को दूंगी 6 out of 10. Okay. So with that, our combined score is 5 out of 10. And finally, we feel that Jigra had a lot of potential, but it is marred by mediocrity. Not sure Gaurav इस movie में क्या गलत हो रहा है, but it is a product जिसमें बस पीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जितना ही जिगरा था, just enough to light a beedi and entertain you for a quick weekend outing. Yeah, sadly, doesn't leave a lasting impact. But बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया. Thanks for watching. We'll see you next week. Bye. Bye-bye.